So we defined what engineering is. Um, actually, what is mechanical engineering? ये कोई बता सकता है? What is mechanical engineering? जी, anyone? कोई बता सकता है कि आप लोग क्या करेंगे? You are a mechanical. Well, actually, you are almost, not almost. चलें, will be कह देते हैं. सर जिसमें हम फोर्सेस एनर्जी के बारे में सर डिस्कस करते हैं। इंजीनियर जिसमें आप फोर्स, फोर्सेस सर एनर्जी एनर्जी, सर मोशन मोशन. वर्क सर जी वगैरह डिस्कस करते हैं सर जी। इनफ. दिस इज वेरी प्रिसाइज. ये दिस इज इनफ. इसमें मीनिंग द प्रॉब्लम्स जो आप ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए बेसिकली देखें. इंजीनियर क्या करता है कि ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स. ठीक है जी. तो you have a problem, you find solution for it. ठीक है. You have a question and an engineer find an answer for it. This is what we do. Um, Now, questions or problems related to situations which has force, energy, and motion involved, a mechanical engineer will take care of that. ठीक है जी. Anyone else who can, what is their view of mechanical engineering? जी. Sir, it also includes design and development, It improves, design and development of machines. improves, design, and develop. जी. Anything else that you would Sir, want? जी. the study of working artfully for facilitation. Discovery. Or, sir, the study of working artfully. Oh, okay. The study of working artfully For facilitation, sir. for facilitation. Manufacturing of things to facilitate the human world. Manufacturing of things Thing to facilitate the human world. ठीक है. अच्छा. और we are just discussing. Nobody's wrong here, huh? I just want to see what does your inner self say about what you are doing. More. चले जी हम पूछते हैं.
किसी से पूछ लें। मोहम्मद बिलाल। Sir, to design a machine which save our time and money. Design a machine to save. Okay, ji. So design a machine to save money and time. Anything else that you would expect a mechanical engineer to do? Designing up anything that include forces and stress, strain, etc. Okay. Forces, stress, etc. Acha ji, whatever you said, that is covered in the force, energy, and motion. So all the things that you just mentioned, they are uh, covered in this definition of mechanical engineer, that we will deal with anything that has that includes force or energy or motion. Now, is there any field uh, that चले बल्कि let's see, where are mechanical engineers employed? कहाँ पे जॉब होते हैं इनके? Power plants में सर होते हैं. इंडस्ट्रीज में सर। इंडस्ट्री? और कौन सी इंडस्ट्री? सर इसमें काफी सारी इंडस्ट्रीज, बस सर जिधर भी मशीन होगी सर उधर मैकेनिकल इंजीनियर की नीड होगी। अच्छा, चले जिधर भी मशीन होंगे वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर होगा, जिस इंडस्ट्री में होंगे। अच्छा, और कौन से फील्ड्स हैं? डिफेंस इंडस्ट्री। जी सर, डैम्स वगैरह में सर। डैम्स, डिफेंस, और सर सर जी रेलवे ऐसी और कोई चीज ही नहीं। लेता है. हाँ? सर रेलवे। कौन सा? और प्लांट। पावर प्लांट हो गया, ठीक है। सर ऐसी रेलवे। कोई चीज ही नहीं है जिसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व ना हो, मैकेनिकल। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, ये सही कह रहा है। नो सर, सर दुकान में तो मैकेनिकल इंजीनियर इन्वॉल्वमेंट नहीं है. कौन सी जगह पे? दुकानों में सर. दुकानों में? स्टोर्स. सर मोस्टली कारपेंटर की दुकान में। सर आईटी इंडस्ट्री में भी नहीं है सर.
सर मैंने सारी बात खत्म कर दी थी सर, जिधर भी मशीन की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है। तो इसमें आपको कोई इंजीनियर नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ इंजीनियर। राजू है? नो सर, आईटी इंडस्ट्री में चाहिए होगा ना सर। और दुकान में नहीं चाहिए होगा। सर बिजनेस में भी नहीं चाहिए सर। बिजनेस में भी नहीं चाहिए, चलिए बिजनेस में भी नहीं चाहिए। सर इनडायरेक्टली सब में इंक्लूडेड है। इसके लिए ऑटोमोटिव, एयर कंडीशनिंग, दुकान के लिए मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर में आपका एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोटिव, ये सब इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? है फिर हॉस्पिटल में होता है कि नहीं? यस सर, होता है ना सर। वो क्या करता है? सर, काफी बड़ी बड़ी मशीनें होती है बायो मेडिकल। मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं सर जी, मैकेनिकल इंजीनियर, उधर इक्विपमेंट होता है उनका। इक्विपमेंट होते हैं सर। ये सर, ये सर वेंटिलेटर सर, ऑक्सीजन सिस्टम, सारा आईसीयू में सर जो सिस्टम लगे होते हैं सर सारे। सर हमें हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है जो को मैकेनिकल के थ्रू प्रोसेस जनरेट होती है। बिल्कुल, वो तो डैम्स में आपने लिख दिया ना कि डैम्स में आपके मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, ठीक है। I think there is no field that can work without a mechanical engineer. This is the vastest field of engineering. बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि जो प्रॉब्लम, if a problem cannot be taken by any other engineer, that is the problem of a mechanical engineer. And this is very true. कोई भी बात हो जो दूसरा इंजीनियर कहता है कि ये मैं नहीं करूंगा, तो मैकेनिकल इंजीनियर इज रेडी टू टेक दैट, क्योंकि एनर्जी, फोर्स और मोशन तकरीबन या इसमें से एक किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इन लाइफ विल टेल यू कि आप इतने डाइवर्स फील्ड्स में जाएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू, यू विल बी एस्टॉनिश्ड कि लैब्स में या इसमें आप इस तरह के, तो इवन you might have to work with things like, I work with insects. So is that mechanical? Is an insect mechanical system? नो सर, No? Why not? तो बायोलॉजी में आती। It flies. यस। So how about the flight? Oh, It has wings. On the wings, it applies forces, right? Yeah. yes sir. यस सर। It moves. Isn't it the work of mechanical engineer? यस What if Yes sir. we ask you that how does this butterfly take a turn? तो आप क्या बताएंगे? कौन बता सकता है आपको? सर, ये एक विंग इसका नीचे हो जाता था, दूसरा विंग ऊपर हो जाता था, तो जहाज की तरह सारी बता कौन टर्न सकता ले लेती है सर। है? क्या होता है?
एक विंग ऊपर होता है। या सर ये अपनी बॉडी को जरा सा टिल्ट कर लेती होगी ना सर, एक विंग ऊपर कर लेती होगी एक नीचे सर, तो जहाज की तरह टर्न लेती ले लेती होगी। बड़ी आपने तो बहुत सिंपल करके बताया है। and, अल्लाह करे कि इतनी आसानी से हमें समझ आए चीजें, बट इट्स अ गुड गेस कि एक तरफ ये टिल्ट हो जाता है, बट ओनली अ मैकेनिकल इंजीनियर कैन टेल यू कि ये किस तरह से टर्न लेगा। यू हैव टू। वो प्रेशर सर नीचे प्रेशर या ऊपर कम ज्यादा होगा। ठीक है, चले जो भी है, whatever it is, but a mechanical engineer will tell you, यानी कोई और बताएगा। Yes, sir, mechanical. हाँ? यस सर, मैकेनिकल इंजीनियर भी बताएगा सर, और ये जो एरोडायनामिक्स वाले होते हैं सर ये भी बता सकते हैं सर, एरोनॉटिकल इंजीनियर। एरोडायनामिक्स वाले भी बताएंगे बिल्कुल, लेकिन आप मैकेनिकल में एरोडायनामिक्स they go together almost, though I don't know। थर्मोडायनामिक्स। जी, though I don't know much about aerodynamics, लेकिन my doctoral degree says yeah aerospace। ठीक है, so we do have concern with aerodynamics and aerospace and all these are interrelated। ठीक है, यस सर, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद सर हम एमएस कर सकते हैं सर, ये एरोडायनामिक्स एनामिक्स में भी सर, इसका मतलब है फील्ड आपस में रिलेटेड। बिल्कुल। अच्छा जनाब, सो यू नो कि आपका हर जगह पे आपका काम है, ठीक है, तो अगर हर जगह पे काम है तो व्हाट डज दैट मीन कि यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। And that is true कि mechanical engineers have a lot of opportunities, they can fit in many fields, and that's why mechanical has come through a long way, लेकिन अपनी हैसियत इसने नहीं खोई। It still remains one of the core engineerings, and people um, opt for it, जैसे आप लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आए हैं एंड यू वांट टू स्टडी, ठीक है। व्हाट वी अच्छा, चले अब हम थोड़ा सा और कन्वर्स करते हैं। व्हाट इज मैकेनिकल, अब चूंकि आपको पता चल गया कि व्हाट इज इंजीनियरिंग, व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन। ये क्या होगा? जी, any feedback from you? Sir, the design of a machine जी, and make sir to improve the design of a machine. जितना आवाज ग्रिप वो है, लेकिन माइक के नजदीक है, आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। सर मैपिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन देयर सॉल्यूशंस, मेक मेकिंग सर मैपिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। the problems and solution, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है सर, मतलब जो मुझे लगता है सर, मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन सर ये इसको सर हम लोग चार्ट की तरह सर, हम इसका जो जितना भी फंक्शन है सर, कोई भी प्रॉब्लम है सर, उसका जितना भी फंक्शन हमारे पास आता है सोल्यूशन में सर, उस सारे को हम सर किसी चार्ट की शक्ल में बना लें सर, या उसका कोई डिजाइन, या सर उसको किसी मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ तो फ्लो चार्ट पढ़ा हुआ, लेकिन सर इस तरीके के और भी चार्ट होते हैं सर, उस ये तरीके से सर हम बना लें सर, तो उसका ये मैप, एक मैप रोड मैप मिल जाता है हमें। ये आपने कहाँ से पढ़ा है अभी? गूगल से। लफज सुना है सर के मैपिंग है सर। अच्छा, Google says that mapping of
प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। ठीक है जी, चलें ठीक है। आई जस्ट वांट टू नो, देखें आपके अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नाउ दिस इज योर फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है जी, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग, देखें आई डोंट केयर कि आप मुझे गलत जवाब देते हैं या सही देते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके बारे में अब यू हैव टू नो। ठीक है जी, बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट 2 साल बाद आप इंजीनियर होंगे। अगर आपको अभी ये पता नहीं है कि व्हाट एम आई, तो फिर मतलब कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि आप ये पढ़ें। यू नीड टू नो कि व्हाट इज योर जॉब। ठीक है जी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आपकी ज़िंदगी में अभी आएगा, because you are going to be a professional engineer, and what is an engineer, you should know about what is engineering, and especially what is mechanical engineering. So no answer is wrong here. I just want to poke your inner side, to poke your brain, to to study के हम क्या करेंगे, what are your duties and your responsibilities as an engineer। ठीक है जी, तो whatever comes into your mind you can just state that। जी, कोई और बता सकता है कि what is mechanical engineering? आसान लफ्जों में देखें, when there is a problem and you want to get a solution for it, ठीक है जी, how do you proceed for the solution? इस रास्ते को आप कैसे तय करेंगे? How will you reach the solution? तो इसमें जो steps involve है ना, वो systematic है। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ से jump करेंगे। For every problem you have to follow some steps to solve it, और इन स्टेप्स को या इस प्रोसीजर को या इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम डिजाइन प्रोसेस कहते हैं, और जो मैकेनिकल के साथ रिलेटेड होगा उसको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन कहेंगे। तो जो आपने अभी कहा कि टू मैपिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, तो पहले आप क्या करेंगे कि इस प्रॉब्लम को लेंगे, इसको मैप करेंगे, समझेंगे इसको, एंड देन यू प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन इन अ सर्टेन वे, और उस सर्टेन वे को हम डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, उसको हम डिज़ाइन कहते हैं। तो बेसिकली आप अपने काम को प्लान करते हैं, यू प्लान दैट यू आर गोइंग टू डू इट इन दिस वे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्लानिंग, जो प्रॉब्लम सोल्यूशन की जो आपने प्लानिंग की होती है और जो तरीका आप अपनाते हैं उसको हम डिजाइन कहते हैं। एनी क्वेश्चन? जी, एनी क्वेश्चन? नो? अच्छा चलें, अभी हमने कहा कि इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में हमने कहा कि टू यूज द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ, कहीं पे हमने कहा था ना, लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। ठीक है जी, व्हाट इज साइंस देन? What is the difference between engineering and science? जी, what is science? साइंस में हम क्या करते हैं?
So the knowledge which we gain from observation and experiment. जबरदस्त. हम ऑब्जर्वेशन करते हैं and we come to know about something, about that, क्या, जिसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, और जिसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? What do we call that? System. System. Anything that is under observation, that is known as a system. ठीक है जी? So what does a scientist do? And you can be an engineer scientist too. You can also observe things. So इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन what does a scientist do is वो एक system को देखता है which already exists. There is some input to the system. There is some output from the system. And when when that scientist observes it, he finds out that how is the system working to convert this input to this output, and he finds out the laws of nature or science or the principles that the system would work on. ठीक है जी? तो साइंटिस्ट क्या करता है कि he finds out these, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. ठीक है? You can neither destroy energy or make energy, create energy. Um, Energy can neither be created nor destroyed. ठीक है? But can be changed from one form to another. That is a law. What does an engineer do over here? वो क्या करेगा? सर इसी लॉस को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. इसी लॉज को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. He will take, well, let's put it this way, कि इंजीनियर को लॉज का पता है, किसी ने उसको बताया है, लॉज ऑफ नेचर. Someone told him, and who is that someone? A scientist, and he knows the principles. ठीक है? तो उसको ये चीजें पता है. He knows the input. ये क्वेश्चन होगा ना, इनपुट. इसको हम, जो हमें चाहिए वो क्या होगा? आउटपुट. So what does an engineer do is that he builds a system for it to change that input to the output that you desire, and he builds this system. So the system does not exist. When you are an engineer, you have to create the system. ठीक है? तो when you create the system, what does that mean? That this is a creative work. It is more than what the scientist would do, right? Because you have built something that did not exist at all. This is creative, innovative, and you make inventions. Uh, so this means that you create something that did not exist at the first place. So, for example, your input
you want to make electricity. Okay? What are your inputs going to be? What resources do you have? For example, water, and that has potential energy. Okay? And what is the output? You want to make electricity, and that electricity of this many megawatt. Okay? But looking at the laws of nature, you will look at what is the potential energy in the water, or how much water is available. Are you going to be able to get this megawatt or not? And you build a system for that. The turbines that you make, the waterways, and so on. How does the water fall? How does the water exit? You do all these things. And a civil engineer will also be there, an electrical engineer will also be there, who's going to help in the building construction, milling and construction, and this man is going to work on the generator that you couple with your turbine, plus the distribution of that electricity to the grid. Okay? Uh, but basically, water between water and at the exit of turbine, you are going to be responsible. A mechanical engineer will be responsible for the all the conversion of the potential energy of water to mechanical energy. Okay? Any question? Any question? Yes, no, No, sir. No. No. no, yes. Okay. So this is just, as I said, I was going to poke you. This is your first class, so go ahead and read about yourselves. कि आप लोग क्या करेंगे, क्या होंगे, what will be your significance in the world. Um and we expect a lot from you. So you are going to keep this world safe and comfortable for everyone. I think this is enough for today, huh? Um, we are not going to proceed any further. अगर आप में से सीआर कौन है? Sakleen. Sir, may I second?